Hello my dear students, welcome back to our Path Maths online classes. Yes dear students, we are doing the topic limits and derivative, and in our topic we have completed 22 questions from your NCERT book, and this was here from exercise 13.1. So today we are going to start with the question number 23, and which states that we need to find the limit x tends to 0 on the function where function is defined as 2x plus 3 if x is less than or equal to 0 and thrice of x plus 1 if x is greater than 0. So first of all, let's consider this function. What is the function? The function is given as something like this. This is your real line from minus infinity to plus infinity. This is the point 0 where the function is revolving. The value of the function is 2x plus 3 till this point 0, and more than 0 this function is thrice of x plus 1, and we need to find the limit whenever x is approaches to 0. So let's see dear students, we know very well कि whenever x is approaches to 0 it is never equal to 0. कभी equal to 0 नहीं होती है. It may be more than 0 or may be or less than 0. और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों केसेस में आप लोगों को लिमिट निकालनी होगी. और अगर दोनों की लिमिट अगर सेम आती है, वैल्यू सेम आती है, then that will be the value of the function, otherwise limit will not exist. So the cases whenever x is smaller than 0, and that case is known as your left hand limit of the function, and this is represented by x approaches to 0 negative. If x is smaller than 0, this is represented by x approaches to 0 negative and known as your left hand limit. If x is more than 0, it implies x approaches to 0 positive, and this is known as your right hand limit. So in this case dear students, जहाँ फंक्शन आपको रिवॉल्व होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट से लेस देन उसकी वैल्यू कुछ और होती है, पॉइंट से ग्रेटर पे वैल्यू कुछ और होती है, तो इस ऐसे केसेस में वी नीड टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज योर राइट हैंड लिमिट, बिकॉज वी वांट टू चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेस देन 0 एंड मोर देन 0 आर सेम और नॉट. अगर सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द आंसर. So let me find first of all left hand limit. So this is represented by LHL also, and given by limit x approaches to 0 negative, because we are taking the limits which are less than 0. In this case the function is to be taken as 2x plus 3, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से कम होती है तो फंक्शन हमारा होगा 2x plus 3. So this function need to be taken. Now what is the meaning of x tends to 0 negative? 0 negative means the values which are less than 0. और बच्चों और less than 0 मतलब 0 से छोटी, और 0 से छोटी there are so many values which are lying well less than 0. तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और बहुत सारी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं. तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लाने के लिए, एक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए वी नीड अनदर सब्स्टिट्यूशन हेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट x is equal to 0 minus h, because x is approaching to 0 negative. So let me take any arbitrary constant h which is less than 0. So as x approaches to 0 negative, h will approach to 0. So this question will be now limit h approaches to 0 twice of 0 minus h plus 3. Now you can put h is equal to 0, because अब यहाँ h directly 0 को approach करता है, so put कर सकते हैं. This will be 3. You can see the left hand limit of the function is 3. Now let me find the right hand limit also. For right hand limit, almost same process we need to follow. Limit x approaches to 0 positive, क्योंकि हम right hand limit means more than 0 we are taking, so this is this is to be taken as 0 positive. The value of the function is thrice of x plus 1 here, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन हमारा thrice of x plus 1 होगा. So this is to be taken as thrice of x plus 1. Now again, because x is approaching to 0 positive and there are so many values which are more than 0, so to substitute a standard value we need a substitution. For that we can put
x is equal to 0 plus h. As x approaches to 0 positive, h will approach to 0. So this is your limit h approaches to 0, thrice of 0 plus h plus 1. Now you can put h is equal to 0 directly here, and this will be given as your 3 again. So you can see left hand limit and right hand limit both are same. So the value of the function at x is equal to 0 is your 3. So left hand limit is equal to right hand limit. These are equal, which is your 3. So in this way you can solve the question number 23. The question number 24, 25, 26, 27, 28, 29, all these questions are similar to this question. So let me do the question number 25 now. 24 is your homework, you can do by yourself, 24 questions. So let me do the question number 25. Again we have a function which is your varying from one point to another point. This is the question number 25, in which we need to evaluate the function given as limit x tends to 0. Evaluate this function where function is defined as your, this is mod of x upon x if x is not equal to 0, and this is 0 if x is equal to 0. You can see whenever x is not equal to 0 means whenever x is more than 0 or x is less than 0. In both the cases the function is to be taken as your mod of x upon x, and whenever x is equal to 0 the value of the function is 0 itself. So let me draw the first of all on the real line. This is minus infinity to plus infinity, 0 point is there. At x is this point 0, the function itself has a value 0, but less than 0 the value of the function is mod of x upon x, and more than 0 it is also mod of x upon x. So no doubt if x is approaching to 0 it may be more than 0 or less than 0. तो दोनों ही केसेस में हम लोगों को यहाँ पर लिमिट चेक करनी होगी, एंड सो मीन्स वी नीड टू फाइंड LHL as well as your RHL. So first of all let me find the LHL. LHL is your left hand limit, and this can be represented by limit x tends to 0 negative. Now the function need to taken as your mod of x upon x, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी mod of x upon x है, और अगर 0 से ज़्यादा है तब भी हमारी यही वैल्यू है. सो दोनों ही केसेस में LHL और RHL दोनों केसेस में हमें यूज़ करना है दिस वन फंक्शन. दिस इज mod of x upon x. फिर से वही क्वेश्चन आता है बच्चों कि 0 नेगेटिव है. 0 नेगेटिव का मतलब सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि हम 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन को चेक कर रहे हैं, और 0 से छोटी वैल्यूज़ तो देयर आर सो मैनी वैल्यूज़ विच आर लेस देन 0. सारी की सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वैल्यू लानी पड़ेगी. एक्सटेंडेड वैल्यू लाने के लिए वी नीड सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? दिस इज़ योर पुट x इज इक्वल टू वट एवर द पॉइंट इज देयर 0 माइनस टेक सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट h, and this will be something like this. If x approaches to 0 negative then h will approach to 0 automatically. Now you can replace this limit by h tends to 0, and this is 0 minus h modulus upon 0 minus h. You can see this is limit h approaches to 0, this is minus h modulus, and modulus of any negative value will be plus h divided by minus h, and these will be cancelled out and will be your answer as your minus 1. So left hand limit of the function is your minus 1. Now let me take RHL, and which is given by limit x approaches to 0 positive. 0 positive means the value of the x which are more than 0. In this case the function is taken to be as your mod of x upon x. Again the value of x are more than 0, and there are so many values which are more than 0. All the values can't be put here, so need to take substitution to take some standard value. For that put x is equal to 0 plus h. As x approaches to 0 positive, h will approach to 0. So this is your limit h approaches to 0, 0 plus h modulus divided by 0 plus h, and you will find this is limit h approaches to 0, h upon h cancel out will be equal to 1. What you will see,
The left hand limit is your -1, right hand limit is your +1. Left hand limit and right hand limit both are not equal to each other, so it means the limit does not exist. Left hand limit is not equal to right hand limit, so limit does not exist. So here limit does not exist. So बच्चों, आप जब भी कोई भी फंक्शन आपको मिलता है और जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ फंक्शन हो आपको, तो LHL RHL दोनों निकाल के चेक करना है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट LHL और RHL दोनों पे वैल्यू फंक्शन की सेम होगी, और अगर LHL और RHL पे दोनों पे वैल्यू सेम नहीं आती तो इट मीन्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. 26 क्वेश्चन योर होमवर्क, you can do by yourself. 27 as well. Let me do the question number 28. This is a good question, number 28, in which we need to find the value of a and b, and it is given that the limit exists for the given function. Question number 28 says that function is your having values a plus bx, 4 and b minus ax. The first case is there whenever x is less than 1, second case whenever x is equal to 1 is there, and the third case whenever x is greater than 1. And this is also given that if limit x tends to, this is your 1, f of x is equal to f of 1 is given to you, then we need to find the value of a as well as your b. First of all, let us consider this one, whatever the given condition is there, whenever limit x is approaching to 1 on the function, this will be equal to f of 1. यानी कि जब x की वैल्यू प्रॉपर तरीके से 1 के इक्वल होगी तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए फंक्शन के ऊपर इक्वल होगी. और वी नो वेरी वेल whenever limit is approaching to any limit or any value, then LHL and RHL दोनों both are same. What it means? This is means LHL, this is mean RHL as well. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है बच्चों तो LHL और RHL दोनों सेम है, और what it mean? This is equal to f of 1. So पहले LHL और RHL निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करता हूँ कि what it means deeply in deep. So first of all, let's find LHL. LHL limit x tends to 1 negative, because at point 1 we are going to find, और उसके लिए आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं रियल लाइन पर फंक्शन को, लेट मी ड्रॉ. दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर a प्लस बी एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन 1, एंड दिस इज 4 at this point, and for more than 1 this is b minus ax. So we are at the point 1 at which we need to find the value of a and b, and the limit exists for this point, means for LHL, for RHL and for at this point. So LHL के लिए क्या करेंगे बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब एक से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन को चेक करते हैं, तो एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज़ योर a प्लस बी एक्स. नाउ पुट x is equal to 1 minus h, as x approaches to 1 negative, h will approach to 0. So this is your limit h approaches to 0, a plus b times of 1 minus h. अब h को भी 0 करना है हमें, so answer will be your a plus b. Now the second case for RHL, let me do here RHL also. I'll do, let me do here RHL, right hand limit. This is given by limit x approaches to 1 positive, 1 positive क्योंकि 1 पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, और 1 पॉजिटिव मतलब मोर देन 1 के लिए द फंक्शन इज टेकन एज योर b minus ax, sorry b minus x. Okay, now put x is equal to 1 plus h, as x approaches to 1 positive, h will approach to 0. This question will be now become as your limit h approaches to 0, b minus a times of 1 plus h, क्योंकि h को 0 करना है, so this will be remaining as b minus a. Now let's see, dear students, this is left hand limit, this is your right hand limit, b minus a. Okay, b minus a. So we know very well
दिस इज अ गिवन कंडीशन कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, फंक्शन के ऊपर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और एफ ऑफ 1 दोनों के दोनों इक्वल हैं। मींस अगर x 1 को अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करने का मतलब है जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी, दोनों पे दोनों इक्वल हैं, और साथ में जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 है वो भी इक्वल है। इट मीन्स LHL RHL और पॉइंट पर तीनों पे वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी है a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट हमारी b माइनस ए, और जो एट x इज इक्वल टू 1 पे जो पॉइंट है वैल्यू ऑफ फंक्शन की वो है हमारी 4। सो इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 4। So we have the two linear equation in the form of a and b. Let us solve these two equations. By adding equation number 1 and 2, a will be cancelled out with the a. So this is 2b is equal to 8, b will be 4. After getting the value of b, you will get the value of a as your 0. So the value of a will be 0 and b will be 0 in case whenever limit x approaches to 1 on the function will be equal to f of 1. So this was the question number 28, my dear students. I think you can do by yourself question number 29 and 30 as well. Now let me do the question number 31st. 31 question we are going to do. In which we need to evaluate the function limit x tends to 1 on fx. मीन्स अगर इवेल्यूएट करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर x 1 को अप्रोच करती है और तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी ये निकालना हमें, और फंक्शन में क्या, फंक्शन हमें दिया हुआ है कि कंडीशन के थ्रू जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई को क्या, कौन सा फंक्शन है हमारा, limit x tends to 1, this is f of x minus 2 upon this is x square minus 1 is equal to, I think this is pi, yes this is pi. ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें फंक्शन निकालना है। पहली बात तो क्योंकि ये इसको इवेल्युएट करना है, सो इट मीन्स LHL RHL दोनों के लिए जो फंक्शन होगा दैट विल बी सेम एंड दिस इज योर f of 1. So it means whenever x tends to 1 is there on fx we can find only the value of f of 1. So f of 1 अगर मुझे मिल जाता है तो we can find the value limit x tends to 1 on fx. So उसके लिए क्या करते हैं, first of all just use this function, और फंक्शन को यूज़ करने के लिए लिमिट को यूज़ करते हैं और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. दिस विल बी गिवन एज योर f of 1 minus 2 upon 1 minus 1 is equal to pi, which implies f of 1 minus 2 upon 0 is equal to pi, cross multiplied, this is f of 1 minus 2 is equal to 0, implies f of 1 is equal to 2, and this f of 1 is nothing but is your limit x approaches to 1 on fx. So this is the value of the function. Now the question number 32 is your homework and you can do by yourselves. So dear students, this was the exercise 13.